The Railway Cat is an allegorical poem. This is a poem about a railway cat, but at the same time, symbolically, it is talking about the intrusive power of surveillance in our life. Uh, Now, this, according to some people, this cat is a symbol of Hitler. Some people say this cat is a symbolical representation of uh, the power that intrudes into our life, that monitors all our life. Uh, According to some, this cat is a symbol of the modern technology that is omnipresent, omniscient, omnipotent. So, at one level, this seems to be a childish poem, like Billy ke baare mein. But at a deeper level, it is highly political, and it has the multiple layers of meaning. So let us begin. So this cat, Symbolism, is a symbolic cat. It's a cat which symbolizes power, a cat which symbolizes discipline, a cat which symbolizes intrusion into everybody's life, a cat which symbolizes that all the workers should maintain discipline. So this cat, T.S. Eliot says in a very funny way. So the fun actually hides the seriousness in the poem. So the poem can be read at multiple levels. So first read the surface level. So first let us read the surface level. So there is a whisper down the line at 11:39 when the night mail train is ready to depart. So the first line means कि जब ट्रेन मेल ट्रेन नाइट मेल ट्रेन जिसमें मालगाड़ी goods कुछ लोग भी और सामान और चिट्ठियां जाती हैं. So the night train that leaves at 11:30, 11:40. So it cannot leave. Why it cannot leave? Because the cat that is in the mail train, उसका नाम है Skimble. जब तक वो नहीं होगी तो ट्रेन नहीं छूटेगा. Now this sounds very funny that एक बिल्ली के बिना ट्रेन क्यों नहीं चलेगा. So the inner meaning is, in this world of politics, some people have become so powerful that without them, the parliament, the press conference, the government will not run. But in reality, उनका औकात एक बिल्ली जैसा है. So without naming anybody, this cat is a indirect criticism of all those insignificant people who have grabbed the power and have become politicians, जिनके बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन उनका औकात एक बिल्ली जैसा ही है. So आज दौड़ में वो भी पहुंचे जो दौड़ में शामिल न थे. Those who are not even running the race, they are the champions. So this cat is actually, the first few lines is a criticism of all those people, all those undeserving people who achieve a lot of power and position because of some wrong means. Okay. So there is a whisper, कहाँ है बिल्ली, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली कौन, बिल्ली स्किम्बल कहाँ. तो स्टेशन में सब कोई खोज रहा है. कितना बज रहा है? 11:39. The train will not leave until the cat will come. So where is Skimble? Where is Skimble? Is he to hunt the thimble? Thimble is actually एक रिंग जैसा होता है लोहा का, जिसको पहन के लोग स्विंग करते हैं इंग्लैंड में. So here probably she is playing with thimble. So skimble, thimble is just to make it rhyming. But normally cats play with this kind of thing. So this rhyming is also justified. So poet is saying बिल्ली कहाँ है, skimble कहाँ है, उसके बिना तो ट्रेन चालू नहीं हो सकता है. क्या वो खेल रही है thimble के साथ, वो रिंग में पहनने वाला लोहा का. We must find him or the train cannot start. So poet is saying कि जब तक स्किम्बल बिल्ली ट्रेन पे ना चढ़ जाए ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकता. सो ये है कौन? बिल्ली. बिल्ली तो बिल्ली है, बट सी रिप्रेजेंट पावर, सी रिप्रेजेंट सर्वेलेंस, सी रिप्रेजेंट डिक्टेटरशिप, एंड सी रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स. सो उसके बिना ट्रेन स्टार्ट नहीं होगा. ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पॉटर एंड ऑन द स्टेशन मास्टर्स डॉटर, दे आर ऑल सर्चिंग हाई एंड लो एवरीवेयर. सब गार्ड, पॉटर, स्टेशन मास्टर की बेटी, सब कोई खोज रहा है. किसको? बिल्ली. किस, कौन सा बिल्ली? स्किम्बल.
They are searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? Skimble kahan hai? Skimble kahan hai? Unless he is very nimble, मैंने fast the night train cannot do. तो नाइट ट्रेन जो है बिना स्किम्बल के नहीं जा सकता है. नाइट ट्रेन स्टार्ट ही नहीं होगा बिना स्किम्बल के. At 11:42, the signal is nearly due, and the passengers are frantic. सब लोग पागल जैसा इधर भागा दौड़ी हो रहा है. और ट्रेन चालू कैसे हो जब तक बिल्ली ना. The passengers are frantic. लोग पागल हो रहे हैं. The skimble will appear. फिर लास्ट में स्किम्बल आती है. Saunter to the rear. वो आगे जाती है. कहाँ थी वो? He has been busy. दिल्ली बिजी थी. कहाँ? लगेज वैन में. वहां उसको कुछ खाना वाना मिला होगा. But it on another level, it also means that she was actually surveying the luggage. मतलब वो CCTV जैसा काम कर रही थी कि लगेज में क्या है नहीं है. So as I told you in the beginning that this cat is a symbol of intrusion into everybody's life. This cat is a symbol of, omnipresent, omniscient, omnipotent. Omniscient मतलब उसको सब पता हो. Omnipotent मतलब इसके पास सब पावर है. और omnipresent मतलब जो हर जगह हो. So ये cat is a symbol of panoptical power. मतलब वो चारों तरफ घूम के देखते रहती है. So he has been busy. The cat has been busy in the luggage van. So at a surface level, luggage van में खाने को मिलेगा बिल्डिंग वहाँ. One level. At a deeper level, it means that luggage van is very important because luggage van can help in transference of armament. It can have bomb. It can have so many things. It can have narcotics. So ये बिल्ली, symbol of power, has to monitor the luggage van. He gives one flash of the green eyes and the signal goes green. So what the signal master, the train master, the coolie, the porter could not start the train. Okay, झंडा दिखाने वाले के ट्रेन से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्ली के ग्रीन आंखों में वो ताकत है कि ट्रेन स्टार्ट हो. So for a child this is funny, but for a politically motivated person it means that जब तक politicians लोग, power centric लोग, authoritative लोग, उनका इशारा ना हो जाए, बाकी कुछ होने से भी कुछ नहीं होता. Until the political people, the people of power, actually shows the green signal, any other green signal is of no meaning. We are off for the northern part on the northern hemisphere. So train चलने लगता northern side में, northern hemisphere. You may say by last Kimball, who is in the charge of the sleeping carriage express. तो ये पूरा ट्रेन का जिम्मेदारी किसका है? बिल्ली का. Skimble Billy is in charge of, Skimble Cat is in charge of a sleeping car express. So ये sleeping car express ऐसे ट्रेन का नाम है, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, वैसे पूर्वा एक्सप्रेस, वैसे स्लीपिंग कार एक्सप्रेस के जहाँ लोग सो के जाते हैं, मतलब स्लीपर क्लास यूरोप का, उसकी पूरा देखभाल जिम्मेदारी दिल्ली की. From the driver and to the guard and the bagman playing card, he surveys them all. As I told you, it's a panoptical system. जेल में होता क्या था पहले जमाने में कि एक बहुत बड़ा टावर होता था. From the tower, it was made in such a way that the man standing at the tower could see every prisoner in the room. So वहाँ से panoptical surveillance का idea आया. So here, like that panoptical में चाहे तो घूम के surveillance करता है. Surveillance में CCTV वाला surveillance. तो ये सबको देखते रहती है. See, like the CCTV camera, like the power centric people who can observe you all the time, like the digital surveillance. लोग बोलते मैंने सुना है, whatever you're doing, there is some power always observing you. Google is observing you. Some people say digital footprints होते हैं. Similarly, ये बिल्ली ड्राइवर को देखती है, गार्ड को देखती है, जो लोग कार्ड खेल रहे हैं उनको देखती है. He will supervise everybody more or less. Down the corridor, he paces and examines every face. सबके चेहरे को देखती है. जैसे वो आजकल मोबाइल में फेस स्कैन, क्या क्या स्कैन, वॉइस स्कैन. So she can scan every person in the corridor. Of the traveler in the first and the third, मैंने first class, third class, अब मैंने अलग-अलग classes होता ना, hierarchy of power. So she can examine everybody. Here again, there is a subtle hint about hierarchy of power. The society is basically
divided into hierarchy of powers, first class, second class, third class. So this train is also symbol of society, and there are different hierarchy of power. Hierarchy मतलब सीढ़ी. He establishes the control by regular patrol. पेट्रोल मतलब ये क्राइम पेट्रोल वाला पेट्रोल है, ये पेट्रोल नहीं आग वाला. पेट्रोल मतलब होता है देखते रहना क्या हो रहा है, नाइट पेट्रोल गार्ड वो वाला. सो ही एस्टैब्लिशेस कंट्रोल, मतलब ये पूरा पावर बिल्ली स्किम्बल के हाथ में, क्योंकि रात को घूम घूम के पेट्रोलिंग करते रहती है, ये करता रहता ही है. The author has used he. He is actually he इसलिए है because according to some I have read it somewhere that he is a symbol of Hitler in a very indirect way, or any power-centric people, Mussolini or that kind of fascist dictatorship. He knows at once if anything occurred, he will watch you without winking and he will seize what you are thinking. This line is very politically motivated. I cannot help but comment here. The author is not at all childish. This line is not for kids. This line is for a very, very evolved, politically minded person. So see, it means he will watch you without winking. मतलब वो दिन भर आपको देखते रहते, even without closing the eyelids. And he can see, बिल्ली आपको देख सकती है कि आप क्या सोच रहे हैं. And I will be a bit slow here, forgive me. I will take 2 minutes to say, how can the cat knows what you're thinking? The cat can only see outside. It cannot see what is there in the mind. But the cat, when the cat becomes symbol, then the cat can see. For example, now whatever you are writing in the net or even in chat GPT or Insta or Facebook, there is some kind of observance and people can, algorithms are always observing you. What is your taste? What is your preference? What are your darkest desires? What are your innermost hidden things that you actually hide it even from your best friends? So the technology always knows what you're thinking. Some people used to say traditionally that your mother understands you the most, they were right then. But now, jokingly, I say that your search engine knows you the most, which might be the joke at a surface level, but it is true because नेट को सब पता होता है कि आप रात अंधेरे में क्या खोज रहे हैं. So net knows आप क्या सोचते हैं. So here, as internet knows what you are thinking, the cat is a symbol of that kind of power, which has some kind of technology, some kind of surveillance, some kind of CCTV camera even in the mind, which knows what you're thinking. Now, why this is so significant? Because if cat knows what you're thinking, it can control you, it can manipulate you, it can take advantage of you, it can use you, misuse you, abuse you. So ये cat को सब यहाँ क्या चलता है ये भी पता. ये अंतर्यामी पहले वाले नहीं, ये अंतर्यामी टेक्नोलॉजी वाले हैं, पावर वाले हैं, पोजीशन वाले. I have heard in stories that in some kind of tribal societies, kids have to narrate what they have seen in the dream, ताकि बड़ों को पता चले बच्चे सोच क्या रहे हैं. वैसे ही सपनों में भी इस बिल्ली की हुकूमत, ये हुकूमत लैंड में नहीं, ये हुकूमत लोगों के सोच पर है. So here the author is making a very, very serious comment that the power-centric people have intruded not just into societies and schools and colleges. It is so powerful that it has intruded even in our layers of subconscious mind. It is certain that it does not approve of hilarity and riot. So like most Hitler-like people, most dictators, they do not like, they don't approve of hilarity and riot. इनको हंसी मजाक पसंद नहीं है, इनको हिलारिटी मतलब मस्ती पसंद नहीं है, riot मतलब दंगा पसंद नहीं. So the power-centric people always control things so that the things don't go out of power. So they don't want hilarity. Hilarity means हंसी मजाक, riot means दंगा फसाद. So the folks are very quiet. जब ये बिल्ली आती है, power-centric लोग आते हैं, the cat is a symbol of power. तो सब कुछ अपने आप शांत हो गया. Like teachers, like principal, like Hitler, like Mussolini. I can't say anything about India. So when powerful people come, then there's quite hollow. When Skimble is about and on the move, you can play no pranks with. So आसपास जब Skimble बिल्ली घूमेगी तो आप मजाक नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि Skimble.
ओके बादशाह है, बादशाहों का बादशाह बिल्ली. So he is a cat that cannot be ignored. It's not an ordinary cat. It's a power-centric cat. A cat which is omnipresent, जो हर जगह है. Cat which is omniscient. उसको हर कुछ पता है. Cat which is omnipotent. जिसका पावर सबसे ज्यादा है. उसके बिना ट्रेन ही नहीं चल रहा है. So ये cat को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. So she is a symbolic cat, a special cat who is omniscient, omnipotent, omnipresent, cannot be ignored. So nothing goes wrong in the mail train when Skimble is abroad. So जब तक कि हिटलर जैसी कैट होगी या होगा, irrespective of gender, तो सब कुछ नॉर्मल होगा. अरे जब गुंडा ही देखभाल करने वाला हो तो गुंडा कैसे ही मतलब फिर कोई गुंडा अटैक क्यों करे? What they call in mafia language is protection money. So you're already hiring a mafia to protect you. So no other mafia will again attack you. So this cat cannot be ignored because it protects you on the train. Oh, it is very pleasant when you have found your little den with your name written on the top. So here, the author is now talking about class system. इसी ट्रेन में ना एक मतलब सूट रूम जैसा रूम है, मतलब मतलब आई मीन टू से वेरी हाई फाई sophisticated rooms होते हैं इंग्लैंड के कुछ कुछ ट्रेन में, इंडिया में भी होते हैं. So here you'll see one नाम लिखा होता है, okay, this Mr. This will travel in this. Okay, छोटा सा रूम होता है. And the berth is very neat. Okay, जैसे फर्स्ट क्लास में, okay, राजधानी में और क्या क्या महाराजा एक्सप्रेस, all those trains में. So the berth is very neat and there is a folded sheet. There's not speck of dust on the floor. मतलब एक छोटा सा speck of dust भी नहीं, मैंने एक गंदगी भी नहीं. So here the author is making cat a symbol of commitment, dedication, loyalty, positive things also. Of course, to हर चीज के negative positive होते हैं. So this cat is also a symbol of maintaining discipline because उसके आते hilarity नहीं होता मैंने कहा, उसके आते riot नहीं होता, उसके आते कोई भी attack नहीं कर सकता. उसके रहते ही there is not a speck of dust, मतलब एक गंदगी का एक dot भी नहीं है. There is every sort of light you can make it day or night. डार्क बनना है, इतना लाइट है कि आप चाहे तो उसको बंद करके रात कर सकते हैं, चाहे तो दिन कर सकते हैं. So here the author is talking about the affluence of people, रईसी लोगों. And there is a handle you can turn to this, मतलब एक handle को से हवा का. So here the poet is talking about a handle. Once you turn it, you find a breeze. There's a funny little basin you are supposed to wash your face in. एक basin है, वो आप चेहरा धो सकते हैं. A crank to shut the window, एक switch जैसा है जिसको press करने से window बंद हो जाता है. Even if you sneeze, the author is making fun of it. इतना यहाँ एस्ट्रोकेसी है कि छींकने से भी विंडो बंद होता है. ओके, एक वॉश बेसिन है, ये है, वो है. So here the author is talking about class division. At one time when this poem was written, the world is having extreme poverty. On the other hand, this is a special kind of cabin in the train where there's a window, there's a switch to have air, and there's all kinds of comfort. Then the guard looks in politely and will ask you very brightly. So उसमें एक guard भी है, तो वो भी politely पूछता है passengers से, do you like a morning tea or stronger tea? पूछता है कि चाय कड़क या हल्का. Now here again author is mocking at extravaganza of aristocratic people at the cost of millions of people becoming poor. So he is not saying win poverty on a बुरे लोग और अच्छे लोग बुरे होते हैं, but he is saying that there were people, they were very super rich people, they were very rich, but they were very few, and majority people were very poor. So he is just talking about the drift. He is not here as an activist saying Karl Marx जैसा कि सबको इनका उनको दे दो. He is just presenting the picture. It's not a Marxist way of looking at things, but he is just talking about the class division. But Skimble just behind him was going to, so वो बिल्ली सबको ऑब्जर्व करती है, मतलब जो आके पूछेगा कि सर चाय कैसा दे, कड़क के ठंडा, मतलब कड़क के हल्का, उसको भी ध्यान रखती है Skimble, उसके मैनर्स को, उसके बिहेवियर को, because he is always behind him and was ready to remind him. For Skimble won't let anything go wrong.
So skimble billy is a symbol of perfection or symbol of excellence or dedication. When you creep into your cozy berth, pull up the counter pen. मतलब आप जब सोने जाए अपने बेड पे तो वह काउंटर पेन में विंडो उठाने के लिए ऐसा है, ये भी आप उठा सकते हैं. You ought to reflect that it is very nice to know that you won't be bothered by mice. So English में कहावत है, when the cat is there, the mice are away. So अब यहाँ बिल्ली आ गई तो चूहे नहीं आएंगे. Indirect the meaning is when a greater power protects you, the smaller powers are not going to affect you. जैसे वो माफिया दुनिया में होता है कि सबसे बड़ा माफिया को बिजनेसमैन लोग हायर कर लेते हैं, उनको अपना 2% हर मतलब रियल स्टेट का देते हैं. तो इससे क्या होता है, दे प्रोटेक्टेड बाय स्मॉलर माफिया, दे प्रोटेक्टेड बाय राइवल गैंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये बिल्ली अब आपकी हिफाजत करेगी चूहे से. मतलब ये जब बिल्ली आपके साथ है तो ये चूहे क्या ही कर देंगे. चूहे इज अ सिंबल ऑफ पावर, स्मॉलर पावर. You can leave all to the railway cat, the cat of the railway train. So ये स्किम्बल जो है ये रेलवे कैट है. ओके, ये रेलवे इससे चलता है. पता नहीं से बिल्ली का बेच देती है कि रेलवे. In the watches of the night, he is always fresh and bright. मतलब as I told, he is omnipotent, omnipresent, omniscient. तो ये रात को 3 बजे भी सीसीटीवी कैमरा की तरह she is present and active. Every now and then ये बिल्ली कभी कभी चाय पीती है अपने आप को जगाने के लिए. परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्कॉच मैंने वाइन भी पी लेती है क्योंकि उसको तो देखभाल करना ना. सी इज सीसीटीवी कैमरा, इटर्नल सीसीटीवी कैमरा. ऊपर वाला सब कुछ देखता है, यहाँ बिल्ली सब कुछ देखती है. सो ये बिल्ली रात भर जगती है, चाय पी के रहती है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, उसको सब पता है, ओमनीशिएंट है, सीएम में नॉलेज. तो वो चाय पीती है, स्कॉच पीती है, ओनली स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू कैच ए फ्ली. कोई इंसेक्ट उनसे ज्यादा तो उसको भी पकड़ लेती है. यू आर फास्ट asleep. अगर आप ध्यान से सो रहे हैं, इत्मीनान से सो रहे हैं, रिलैक्स, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैट. So if you're sleeping fast asleep or free, so you never knew that she was actually protecting you, walking up and down. वो कॉरिडोर में ये बिल्ली चल रही थी, बल्कि आपको इत्मीनान से नींद आ रहा था, गुंडे नहीं आ रहे थे, अटैक नहीं हो रहा था. So while you were sleeping at a place called Crew, so you never knew, आप तो सो रहे थे, आपको क्या पता बिल्ली जो है कॉरिडोर में चल रही थी. She was walking up and down of the station. स्टेशन के बाहर भी देख रही थी, कोई प्लेटफॉर्म में, मतलब प्लेटफॉर्म से कोई कंपार्टमेंट में आ तो नहीं रहा. You were sleeping all the while he was busy at कार्डलेस. मतलब आप कार्डलेस में एक जगह है, वहां आप सो रहे थे तो बिल्ली आपका देखभाल कर रही थी. While he greets the station master with elation, author is saying कि जब ट्रेन रुकता है तो बिल्ली सबसे पहले स्टेशन मास्टर को ग्रीट करती है. तो बिल्ली आम नहीं है, बिल्ली omnipotent. You saw the cat at Dunford. These are all the places in Europe where he speaks to the police, and if there is anything you ought to obey about, मतलब ये पुलिस से भी बात कर सकती है. इसका कॉन्टेक्ट एज आई टोल्ड यू सबसे omnipotent है, पुलिस से भी इसका कॉन्टेक्ट है. अच्छा, और रेलवे के स्टेशन मास्टर से भी कॉन्टेक्ट है. When you go to Gallowgate, there you have to wait. Gallowgate भी एक जगह है यूरोप में, तो आपको अगर वहां वेट करना पड़े, बस Skimbleshanks will help you to get out. ये बिल्ली आपको मदद करेगी, मैंने हर जगह ही प्रेजेंट है. So the cat will help you to get out of the train. He gives you a wave of the long brown tail and says, "I'll see you again." फिर आप वहां से आप निकल के आप घर आते हैं तो ये पुच्छी लगा बोलती है, "Bye, I'll see you again." So the cat gives a wagging of the tail. अपना टेल पे ऐसे पुच्छी लाती है और बोलती है, "I will see you again." You will meet without fail on the midnight train, the cat of the. फिर अगर आप वापस अभी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो आपको हमेशा ये रेलवे प्लेटफॉर्म की ये रेलवे कैट मिलती है. So if you again travel in this midnight mail train, रात का जो ट्रेन जाता है, you will without fail meet this cat on the railway train. So thank you for watching the video. So if you have found this video of any meaning, I request you to share it with your friends. And thank you for watching the video. If you have any comment, please write in the comment box. Thank you.